Let me share my screen, and you must be able to see this screen. Okay, fine. So me and my screen are visible now. Oh my God, I've started chapter probability. I have to start another chapter. Coordinate. Here you are. Don't write anything on the board. Put your annotation mode off. Put your annotation mode off. Otherwise, I will terminate you. Nobody should write anything on screen unless I tell you, unless I ask you to do so. This is lesson number 3, coordinate geometry. Can you see my screen, a little screen on the top of it? Or you can't Yes, sir. see screen? Yes, sir. Okay, fine. So if needed on the board, if needed, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ लिखूंगा, तो दोनों चीजें आपको साथ में दिखेगी, ठीक है ना? I can write down on screen as well by starting my annotation mode, but you don't have to keep it on. I will annotate like this. यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड स्पॉट, तो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा. चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. So here are some introductory sessions or introductory lecture given to you, but you don't have to worry much about it. It is just instruction how to give your address. How will you give your address? You will say some eastern direction, northern direction, western direction. There will be some streets. You will give some give number of street, as well. You will also give number of bungalow. Say in first street, fifth bungalow. So you can easily, anyone can easily find you out. Okay, this is your position. If someone says street number 4, and third bungalow, so you will immediately plot this one or point this one out, isn't it? So by giving some coordinates, at least 2 coordinates we need. 2 coordinates means we need street number and we also need the bungalow number. So 2 coordinates are needed in order to point out any particular position. So there is an activity which we can do if we are sitting into the classroom. अगर हम classroom में हैं तो हम ये activity कर सकते हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सी column में है और कौन से number पे. Third bench, second position, or fifth bench, any other position likewise. So on the basis of that, this is Descartes. Just look at this fellow. This is Rene Descartes. So this is the person who gave this kind of system. That's why this system is known as Cartesian system. If you can see, it is called Cartesian system. So आपको याद रखना है ये वाली system, ये वाली चीजें किसने दी थी? It was given by Descartes. That's why it is known as. Say everyone. Cartesian system. Cartesian system. Called Cartesian system. Good. Cartesian system. Okay. Then there is one exercise given to you, exercise 3.1. How will you describe the position of the table lamp from your study table to another person? अगर आप जहां पर बैठे हैं यहाँ से सामने एक टेबल है और उसके ऊपर टेबल लैंप पड़ा है तो आप कैसे बोलोगे? You go 3 step forward, 2 step left या फिर 2 step right वगैरह कुछ बोलेंगे आप लोग. तो आपको 2 चीजें बतानी पड़ेगी, आगे कितना जाना है या लेफ्ट और राइट कितना जाना है. मतलब two things we require. Similarly, in street plan, the plan which we have seen earlier, यहाँ टेक्स्ट बुक में शुरुआत में हमने जो देखा था, उसी के अंदर a city has 2 main roads which crosses each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. और ये सारी चीजें आपको बताई गई है, लेकिन हमको क्या करना है, ये भी नहीं करना है. You can easily understand this. आपको इसमें समझने में कोई देरी नहीं होगी. यहाँ पर अगर कोई चीज दिखाई गई तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पर
एक्स एक्सिस में कितना जाना है, वाई एक्सिस में कितना जाना है, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया. So you can use that method to describe the location of any point. कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहली एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, तो एक होता है हमारा एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में होता क्या है, जीरो इज एट द सेंटर विच इज कॉल्ड ओरिजिन, और राइट origin, और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं. negative, ऑल नंबर्स आर इक्वली स्पेस, मतलब यहाँ पर जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा. आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को नजदीक में लिखे और यहाँ पर 1 लिखने के बाद 2 यहाँ पर लिखे, ये नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट हैपन. Okay, so you'll have to write this kind of number line. Now, what if we have two lines perpendicular to each other? So we can draw two lines perpendicular to each other in any manner, but better we will choose this method where the x-axis is written exactly represented exactly horizontal and y-axis is the vertical one. So we will select that and name them as well. In this chapter, we will call horizontal line as x-axis. You can represent that line as x dash x or x dash, whichever way. And vertical line को हम represent कैसे करेंगे? Vertical line can be represented as y dash. ठीक है? तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर x dash और y dash कैसे आता है. ये रही हमारी horizontal line जो जिसको बोला जाता है x dash x. So x dash x line, और ये वाली वर्टिकल लाइन है उसको बोलेंगे y dash. दोनों का ओरिजिन बीच में आएगा सेंटर में. ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिजिन. We will call it origin. अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? What will be the coordinates of origin? अगर कोई पूछे आपको ये वाला पॉइंट जैसे मैंने रेड डॉट में दिखाया और उसके कोऑर्डिनेट आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? 1,1. ठीक है ना? 0, Wait. I am asking about this. 1,1. If I place this point over here, what will you call it? 2,1. 2,1, What if I place it somewhere over here? What will you call it? 1,5, 1,5. So the very first coordinate you will have to mention is x coordinate. बाद में हमको y coordinate बताना है. ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें x कितना आएगा? 0, y कितना आएगा? 0, तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा. 0, 0,0 में. तो the coordinates of origin, अगर आपको कोई पूछे what are the coordinates of origin, तो आपको लिखना पड़ेगा it is 0,0, 0,0. दिखता है ना? yes sir, So 0,0 is the coordinate of origin. अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें OX, so OX इस रहेगा, आर्म बोलते हैं इसको. This is arm. Let me write. It's called arm. जो हमारा हाथ होता है ना वैसे इसका आर्म है. तो 0 मतलब OX अगर हम बात करें तो OX जो आएगा वो पॉजिटिव आर्म बोला जाएगा, जबकि OX डैश है वो कैसा आर्म है? negative, और यहाँ पर ये नेगेटिव. वैसे ही अगर आप ऊपर देखो तो OY पॉजिटिव, OY dash negative, Y dash will be negative. Clear? अभी हम आ गए यहाँ पर. The entire plane is now, this Cartesian plane is divided into 4 segments, 4 pieces, और each piece को हम बोलेंगे quadrant. पहला वाला quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth. this is fourth quadrant. So this 2 axis, अगर 1 है तो हम axis ऐसे लिखेंगे. आप ये स्पेलिंग भी खास ध्यान से देख लेना.
अगर मेरे को एक सिंगुलर में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे एक्सेस, उसको बोलेंगे तो एक्सिस ही। और अगर प्लूरल में है तो उसमें चेंज क्या आएगा, कुछ नहीं, ई की जगह पे आई आ जाएगा। ये भी दिखना है, देखना है हमको साथ में। और उससे जो 4 पीसीस बनेंगे, 4 सेगमेंट्स, अगर 4 टुकड़े बनते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेंट। Quadrant. क्योंकि क्वाड्रेंट मींस बोलते हैं इसको 1/4 ऑफ पार्ट, 1/4। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर एज अ होल? 4. 4 quadrants, 4. and 1/4. they are named as 1 2 3 4, 1, 2, but 3. in Roman letters. You will have to write it this way only. अपने नॉर्मल जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं वैसे नहीं लिख सकते, अपने को क्या करना है, रोमन में ही लिखना है। और दैट Roman. एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओएक्स, ये जो ऑक्स है ना, ओएक्स, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है हमको। कैसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में? ऐसे जाएंगे, यहाँ से जाके यहाँ पर ऐसे घूमेंगे। So this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. 4th. तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मैंने सारी दे दी, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर से किसी ने किया, ये किसने लिखा बताऊं क्या? आपको ये नहीं लिखना है, आपको कोई भी लाइन वगैरह कुछ नहीं बनाना है। I'll do everything. ठीक है। So the plane consists of axis and these quadrants. तो ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और 4 क्वाड्रेंट, ये सारे मिला के क्या हो जाएंगे हमारे parts of Cartesian plane. These are all called parts of Cartesian plane. ओके, आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, अलग अलग नाम से उसको बोलेंगे। एक्स वाई प्लेन, दिस प्लेन इज आल्सो कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, एज आई मेंशनड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। एंड इट इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन, वो भी यहाँ पर इन लोगों ने बताया है, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, देयर आर वेरियस नेम्स, and the axes are called coordinate axis. Coordinate axis. So axes are known as coordinate axis, and plane is called Cartesian plane, coordinate plane, or so whatever you do in this chapter, you'll have to do it on graph paper, because in graph paper equidistance lines are already drawn, horizontal as well as vertical, both the types of lines are already drawn. Can you name this point or coordinates of this point P? 4,3. 4,3. So first you'll have to see x-axis. So on x-axis there is 4, and on y-axis there is 3. coordinate is 4 and y coordinate is 3. Therefore it is called 4,3. Similarly, this point is named as -6, -2. -3. So first you'll have to write x coordinate and then the y coordinate. So you guys are very intelligent. You can easily answer all these questions. I don't need to explain or narrate anything like this, but definitely we will go with this. Here it is. As I told you, the x coordinate is also called abscissa. X coordinate means the first number whichever we are writing is called abscissa. And the y coordinate જે પાછળથી આપણે લખીએ, that is called coordinate. Just a minute, I'll be back. Hello, Anisha.
ઓકે આઈ એમ બેક. આ તમારામાંથી કોઈ લખ કરતું છે? આ એરોસ શું કામ પાડો છો? વાય યુ પુટિંગ ધીસ એરોસ? વારે વારે કેવું પડશે? સારું લાગે કે પછી તમને ટર્મિનેટ કરી દઉં? પાછા ઇરેઝ પણ કરી નાખે જ્યારે કે ત્યારે. ડોન્ટ ડુ ઇટ, અધરવાઇઝ અહીંથી ખાલી ક્રોસ મારીશ એટલે કેન્સલ થઈ જશે બધું ઓફ. એ મેં ઓપન એટલા માટે રાખેલું છે સો ધેટ જ્યારે પણ મારે કંઈક પૂછવાનું હોય તમને તો તમને કહીશ કે ચાલો તું લખીને બતાવ, તું લખીને બતાવ, એટલે મેં ઓન રાખેલું છે. અધરવાઇઝ આઈ કુડ હેવ કેપ્ટ ઇટ ઓફ. સેટિંગમાં બધું જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તો સ્માર્ટ લોકોને ખાલી કેવું પડવું છે, ખાલી એક જ વખત કે એટલે સમજ પડી જાય. ડફોડ લોકોને જ સમજ નહીં પડે. So now look at this. Here's x coordinate and x coordinate is called abscissa, while y coordinate એટલે કોણ? જે પાછળ હોય તે. પાછળ હોય તેને શું કહેવાશે? Ordinate. તો હવે હું તમને પૂછું કે આ જે છે તેમાં આમાં ઓર્ડિનેટ કોણ? What is ordinate in this? -2. -2 is ordinate. અને abscissa? -6. This is abscissa and this is ordinate. બીજી પણ એક વસ્તુ કીધેલી છે લોકોએ કે લખાય લખ્યા હોત. બીજા લખે તો મને કેમ કે? हेलो, इसको ऐसे ही लिख सकते 3,4 cannot be written as 4,3. 3,4 and 4,3 are different points, different coordinates. तो order ने जरा भी आमથી તેમ કરવાનો નથી. You cannot alter the order. ચલો હવે કેટલાકના આન્સર આપો. આન્સર મી. Abscissa and the ordinate of point B are this and this respectively, hence coordinate of B are dash comma dash. From example, NCERT ની બુકમાં આ જે ખામી આવે, જે પણ વસ્તુ કહેવાની હોય તો રેફરન્સ એ લોકો એટલો દૂર આપેલો હોય કે આપણે ઓલ્ટર કરી કરીને થાકી જઈએ. They are asking 3.14, 3.11, 3.11 બી પાછું શું ઇલસ્ટ્રેશન છે કે 3.11 ઓકે નીચે હશે. 10 ફિગર 3.11 તમને કયા પોઈન્ટની વાત હશે મારે જોવું પડશે. અચ્છા હું તમને ડાયરેક્ટ આપું અને હું તમને બી. So they are asking about B. ચલો B નો ઓર્ડિનેટ કયો? This is B. -3. Ordinate 3 and 4. the coordinate of this point B is coordinate of Ordinate 3. અરે કોઓર્ડિનેટ પૂછે એટલે તમારે લખવાનું 4,3 4,3. અને કોઓર્ડિનેટ્સ કહેવાય. આજે લખું તેને કોઓર્ડિનેટ્સ કહેવાય. x કોઓર્ડિનેટ, y કોઓર્ડિનેટ, પણ જ્યારે તમને એમ કે કોઓર્ડિનેટ્સ લખો તો બે લખવાના સાથે 4,3. ઠીક છે? So second question they are asking is the x coordinate and y coordinate of M. X coordinate and y coordinate of point. X coordinate. -3,4. તમને પૂછું છું x coordinate 4,3. અરે તમને કેમ ખબર નથી પડતી? I am asking x coordinate, that is -3 only. What is y coordinate of M? 4. 4. 4. So
પૂછે તેનો જવાબ આપો ની, સાંભળવાનો question properly and then answer. Therefore coordinates of m હવે જવાબ આપો. -3, -3, -4. Okay, fine. Next question is L. X coordinate and y coordinate of point L. X coordinate -5, -5, y coordinate. -4. You need to look y coordinate on y axis and x coordinate on x axis. So આના coordinates કેટલા આવશે? What will be the coordinates of this? -4, -4. ગમે તેમ બોલે, પહેલા બોલવાનું -5 then -4 then point S. X coordinate 3, asking x coordinate. Why don't you listen to question? 3, X coordinate. 3. I'm asking you only x coordinate. You are saying 3, 5. So what the hell is it? What the hell is it? Only x. And what is y coordinate? -4. When I ask you nothing x, y, you kind of coordinate. Coordinates of x. What are coordinates of S? 3, -4. Asking a single question 3 times and then you are answering. What the hell is it? It's so easy. Coordinates means x and y together. When someone asks you only x coordinate, you have to name x coordinate only. When I ask you y coordinate, you have to name y coordinate only. But when I say coordinates, so both together, this comma, this. That's the way to do it. Please take care of that. Now in the same Cartesian plane, if I want to represent -3, 4, where will you put -3, 4? कोई मने point plot કરીને बताओ, टपको મૂકો. -3, 4. Now you can use your annotation mode. Or can you name the point? It is already mentioned over here. -3, 4. M. M? What are you saying? -3, 4. Yes, as someone said S. It is -3, 4. That is M. That's right. Correct. So it's easy. It's easy to do all these things. Let's go ahead and try exercise 3.2. So 3.1 was easy. This is already what I've explained you about the coordinates and the sign. Now let's come back to this exercise. Exercise 3.2. Question 1. Write the answers of each of the following questions. First, what is name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point on Cartesian plane? So what is name of horizontal line? X-axis and Y-axis. X line. Answer the question and answer. Don't be so excited. What is name of horizontal line? X length. अरे horizontal line ने શું કહેવાય? નામ શું એનું? X-axis. હું કઈ બી જવાબ આપ્યા કરે. Just listen to question and then answer. What is it called? I said. What is vertical line called? Y-axis. What is name of part
of the plane formed by these two lines? Quadrant. Very good. Quadrant. Very good. So these two lines, okay, just a minute. These two lines, say x line, x axis and y axis. These two lines divide the entire plane into four parts. How many parts it divided into? Four parts. 2, 3, and 4. And each one of them is known as quadrant. Quadrant. Okay. Okay. Next question is, write the name of the point where these two lines intersect. Origin. So it is called origin. जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको origin. ठीक है? Then in figure 3.14, name these points B, C, and this. So that you know, आपको आता ही है, आता है कि नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पर मेरे को स्क्रॉल डाउन करके जाना पड़ेगा ऑल द वे टू 3.14. ये एनसीईआरटी की बुक में यही है, रेफरेंस बहुत दूर दूर तक दिया होता है. ये हुई फिगर 3.14. अच्छा, नीचे बैक साइड पे है तो अच्छा है. ये रही फिगर. क्वेश्चंस मैं बोलूंगा और आपको, क्योंकि बार बार वो करना नहीं पड़े. क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन से मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी? -5, -2. Minus 5. -2. Very good. -5, 2. What are coordinates of point C? -5, -5. -5, -5. Then the point identified by -3, -5. E. This is -3, -3, -5. The point described by that is E. Okay. Next question. Identified by 2, -. G. Okay, ठीक है. The abscissa of point D. Only abscissa of point D. 6. X coordinate. सिर्फ x ही बोलना है, इसको x abscissa बोलते हैं. The ordinate of point H. -3. Abscissa means y-axis. That is so the ordinates of point H. 0,5. 0,5. Where is L by? 0,5. 0,5. It's over here. तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको कौन से कोऑर्डिनेट if I point a point over here, then उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4. x एक्सिस 4 है, ये 0,4 नहीं. पहला वाला अगर मैं बोलूं, राइट, if I talk about the first one, अगर इसकी बात करूं तो सही है. इसके आएंगे x एक्सिस में 0 और y में 4. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0,4. ठीक है, वेरी गुड. ये हुई ना कोई बात. और अगर दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे कि यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 4,0. सबसे पहले आपको x में देखना है, उसके बाद में y में जाना है. तो आपके कोऑर्डिनेट 4,0. तो these are two different points. आपको पता चलने चाहिए. x में 4 जाना है और y में, मतलब ऊपर या नीचे कहीं नहीं जाना है, 0. ठीक है. इस तरह से अगर मैं दूसरा एक पॉइंट लिखूं तो आप उसके कोऑर्डिनेट मेरे को जल्दी से बताइए. ये वाला -2,0. -2,0. -2.
comma zero. comma 0 0 ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में, तो Second. नहीं, ये सेकंड में भी नहीं है, इट इज First. बाय एक्सिस। अगर इसको पूछे तो ये कहाँ पर है, फर्स्ट में, फोर्थ में, कहाँ पर है? x axis It is neither on in first quadrant nor in fourth quadrant. It is on x axis. ये पॉइंट भी x axis है। X axis. ये ध्यान में रखना है, अगर कोई पॉइंट कौन से भी एक्सिस में नहीं है लेकिन वो ऐसे है, कहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लो है, तो उसको बोला जाएगा ऑन y axis. It is on neither of the quadratic equation. कौन से भी quadratic equation में ये नहीं है, इनमें से कौन से भी नहीं। ओके, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज इज ओवर नाउ। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक हम अभी नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी का कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इट्स वेरी स्मॉल चैप्टर एंड विल वाइंड दिस चैप्टर अप टुमारो। आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज 3.2 करनी है, 3.1 नहीं करनी है। तो 3.1 में आपको अपना एड्रेस वगैरह सब बताना है, तो दैट यू कैन डू वेरी इजीली। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ये करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। वी आर साइनिंग ऑफ नाउ। कल मिलेंगे और टीचर के साथ में आपका काम को, ठीक है। Bye, sir. bye sir Bye, sir. bye sir bye sir बाय।